Good morning, everybody. We'll continue with our topic, Parliament. And at Parliament, today we'll be discussing another motion, that is calling attention motion. Calling attention motion. You can write down what is calling attention motion. Okay, what was kangaroo closer? What was kangaroo closer? Vote, right. Okay, we pick up the important clauses and we vote only for them, and other clauses we take it as skip it or pass it. Okay, and mostly it is done due to, that is also done due to paucity of time. Yeah. Okay. What is simple closer, Hanisha? Priyanshi? Simple closer. क्यों सिंपल क्लोजर क्या है? लॉजिक से बताओ ना, सिंपल क्लोजर क्या है? क्लोजर क्या था? क्लोजर मोशन क्या था? उसमें सिंपल क्लोजर क्या था? क्लोजर मोशन ही बता दो मुझे क्या था. हाँ सही जा रहे हो. क्या था? क्लोजर मोशन, यानी कि डिबेट खत्म करना और उस पर वोट करना. सिंपल क्लोजर क्या था? यस विनीता. Yeah, enough debate is done, discussion is done, people have got enough facts, have understood the issue, and voting is done. That is simple closer. ठीक है, revise. Okay, lakho calling attention motion. It is a device used by members. It is a device used by members to call attention of a minister. To call attention of a minister to a matter of urgent public importance. To a matter of urgent public importance. Full stop. Also seek some information. Also seek some information. Or authoritative statement. मतलब कोई अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, उस चीज के लिए उस मोशन को मूव किया जाता है. और ऑथोरिटेटिव स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इशू और कंसर्न मैटर. रिगार्डिंग द इशू और कंसर्न मैटर. सो मिनिस्टर के अटेंशन को, ओके, dear minister, kindly pay attention on this matter because it is a very important matter, it needs to be discussed. या इस पे बाकी लोगों को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए उस अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस मैटर पे, कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, या उन मिनिस्टर की तरफ कोई स्टेटमेंट चाहिए, प्लीज कमेंट समथिंग, दिस इज हैपनिंग इन द कंट्री, then we will use calling attention motion, that please look into this matter first. अब for example कंट्री में कुछ चल रहा है, मिनिस्टर इज स्पीकिंग समथिंग एल्स, या नहीं भी बोल रहे, बट यू नीड टू कॉल, ओके दिस इज द मैटर विच इज एट हैंड एंड वी मस्ट एड्रेस इट. एटलीस्ट गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टेटमेंट आए, मिनिस्टर की तरफ से कोई स्टेटमेंट आए कि व्हाट इज योर कॉल, व्हाट इज योर से, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन ऑन दिस मैटर. ये जो एक्सीडेंट हो गया इसमें रेलवे मिनिस्टर को बोला जाए, प्लीज कॉमेंट ऑन इट, दिस इज इंपॉर्टेंट. अफरा तफरी मची हुई है सब जगह पर. दैट इज कॉलिंग अटेंशन मोशन. गेटिंग? Write down. इसी में it is an Indian innovation enforced since 1954. It is an Indian innovation enforced since 1954. Which device was not mentioned in the rules of procedure? Are you able to recall? 0R, yes. And you can write, unlike 0R, this is mentioned in rules of procedure. Unlike 0R, this is mentioned in rules of procedure. Why I made you write 0R? So that you remember it.
1954. Clear? Next, adjournment motion. This is also something of urgent public importance only. Write down. It is a device. Adjournment motion. कहाँ रह गया हनीशा? हो गया? Rules of procedure. Quotes में लिखो rules of R will be capital. Rules of procedure. In quotes. Now write down adjournment motion. Again, it is a device that is used to bring attention of the House. It is a device that is used to bring attention of the House to a matter of public importance. Next line. It needs support of at least 50 members. It needs support of at least 50 members. 50. And this is very important. Next line, very important. Actually, this particular adjournment motion, it seeks kind of censor on the government. So it can be used only by Lok Sabha. This particular motion is used only by Lok Sabha. You can write, since it involves censor of the government, CENSURE, censor. Since it involves censor of the government, it is only Lok Sabha that can use this device. It is only Lok Sabha that can use this device. Underline, only Lok Sabha can use this device. Next line. The right to move this motion is used with certain restrictions. The right to move this motion is used with certain restrictions. Now, what are those restrictions? I'll talk about that. The first restriction is कि whatever, if you're putting adjournment motion, if you're आप किसी चीज को adjourn क्या कर रहे हो, रोक रहे हो चीजों को, and taking a matter of public importance. So if you're using adjournment motion, you need to discuss a matter of public importance, urgent public importance only. ये नहीं कोई और इशू ले आए जो इंपॉर्टेंट नहीं और आपने सेंसर कर दिया गवर्नमेंट को. No. So first condition, matter should be of urgent public importance. Matter should be of urgent public importance. Number 2, only one matter can be taken up. Only one matter can be taken up. You can't raise a matter of privilege. Privilege वाला matter आप नहीं raise करोगे. You can't raise a matter of privilege. Another, ऐसा नहीं है जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कोई मैटर पहले डिस्कस हो चुका है, इट इज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, अब आप नेक्स्ट टाइम एडजर्नमेंट मोशन को यूज करने के लिए फिर से वही मैटर, ऑल्दो इट इज इंपॉर्टेंट बट यू आर यूजिंग द सेम मैटर, नो, it should be a new matter, okay, not the one that has already been discussed. So you can't discuss issues that have already been discussed. You can't discuss issues that have already been discussed. Also, you cannot discuss issues that are sub judice, यानी कि कोई फॉर एग्जाम्पल कोई मैटर कोर्ट में है, उस मैटर को आपने डिस्कस कर सकते हो, ठीक है, दैट मीन्स यू आर, बिकॉज यू आर इन्फ्लुएंसिंग द कोर्ट, डोंट डू दैट, इवन इफ इट इज इंपॉर्टेंट बट इट शुड नॉट बी अंडर द कंसिडरेशन ऑफ द कोर्ट, ऐसा मैटर हो. सो यू कांट टेक एनी इश्यूज दैट इज अंडर jurisdiction. You cannot take up issues that is under jurisdiction. आप समझ सकते हो कि इसमें बहुत क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है.
urgent public importance, one matter at a time. Don't take up issue that has already been discussed. So it's like saving time, na? नहीं तो repetition हो जाएगा चीजों का. Also, it should not be under any jurisdiction. Last restriction is you should not be taking पहले सुन लो, ऐसा कोई मैटर भी मत लो जो किसी और मोशन में आप डिस्कस कर सकते हो. Okay, so you should reserve it exclusively for adjournment only. Okay, for example, आप कोई और मोशन में ले सकते हो and still you're discussing it here. That is wastage of time. So write down, you cannot raise a question. You cannot raise a question that can be raised on another distinct motion. That can be raised on another distinct motion. जैसे कि प्रिविलेज वाली बात है, आपको पता है वो प्रिविलेज मोशन में आप डिस्कस कर सकते हो. देयर इज नो नीड टू यूज adjournment motion for it. So that is all with adjournment motion. Next motion which you all are aware of, no confidence motion. What is no confidence motion, Priyanshi? Yes. क्या होता है no confidence motion? बताया है, come on. क्या होता है? कुछ तो रिकॉल हो रहा होगा. मैंने बताया नो कॉन्फिडेंस मोशन. क्या हो जाता है नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है तो? अब याद करना, अब आप खुद बोलोगे हाँ सुना है. हाँ, right, it leads to fall of the government. ठीक है, it is passed. That is why it is said council of minister is responsible to लोक सभा. और if they lose the confidence, लोक सभा ने बोला नहीं हम ट्रस्ट नहीं कर पा रहे आप पे, you lose the confidence and फिर मोशन पास होगा. अगर आप वो हार जाते हो, आपकी सरकार गिर जाएगी. Getting? So ये statement ध्यान रखना, council of minister is responsible to parliament, council of minister is responsible to only Lok Sabha, to both Rajya Sabha, Lok Sabha. क्या होगा? Remember, council of minister is responsible to Lok Sabha because no confidence motion कौन pass करता है? Lok Sabha. Write down. Especially it is mentioned under Article 75. No confidence motion, it is mentioned under Article 75. As per this article, COM, Council of Ministers, is collectively responsible to Lok Sabha. Next line. Lok Sabha can remove the ministry by passing the no confidence motion. वही same बात मैं लिखवा रही हूँ अलग verb में. If you want to write, you can write it. Lok Sabha can remove the ministry by passing the no confidence motion. And इसमें भी इस motion को अगर pass करना है, मतलब admit करना है, not pass, admit करना है, then it should be admitted with the support of at least 50 members. Right on, this motion can be admitted. Entertain तो बाद में होगा, पहले admit हो. This motion can be admitted with support of 50 members of Lok Sabha. Admitted with support of 50 members of Lok Sabha. Is no confidence motion clear to you? Priyanshi, Hanisha. Priyanshi clear है no confidence motion? अब पूछा जाएगा तो बता दोगे, भूलोगे. मैंने कई बार पूछा है no confidence motion. इसमें तो रिवीजन की जरूरत ही नहीं है, इतने बार क्लास में मैंने डिस्कस कर लिया इसको. अब याद रखना. अगला इसका जस्ट ऑपोजिट, कॉन्फिडेंस मोशन. ये भी सेम ही चीज है बट अलग वे में यूज होगी. नो कॉन्फिडेंस मोशन तो गवर्नमेंट चल रही है, लोकसभा ने इंटरेस्ट लूज कर दिया, कॉन्फिडेंस लूज कर दिया मेंबर्स ने एंड उनके अगेंस्ट पास हो गया. कॉन्फिडेंस मोशन इज ऑल्सो, इट इज अ काइंड ऑफ इंडियन इनोवेशन wherein it is used when the government is formed by very wafer thin majority. यानी कि या तो coalition government है, या minority government है, या hung parliament है. Then the president says that prove your majority, get that confidence, and if you lose it, there is fall of the government.
पास नहीं किया जा रहा है आपके अगेंस्ट, लेकिन आपको प्रूव जरूर करने को बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी मेजोरिटी बहुत कम है, आपकी जो सरकार है बहुत कम उस पर जुड़ी हुई है, पता नहीं कब गिर जाए। इन दैट केस आपको खुद प्रूव करना होगा। फर्स्ट वाले केस में आपके अगेंस्ट चीजों को पहले लगाया जाता है, फिर आप प्रूव करते हो। इस केस में पहले ही आपको प्रेसिडेंट बोल रहे हैं आप प्रूव करो। गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन नो कॉन्फिडेंस एंड कॉन्फिडेंस मोशन? अनीशा लिखो, इट इज अ न्यू प्रोसीजरल डिवाइस, it is a new procedural device it is a new procedural device to tackle situations where there is fractured mandate, to tackle situations where there is fractured mandate, like hung parliament, HUNG, like fractured mandate, like hung parliament, HUNG, hung parliament, comma minority government, and coalition government, COALITION, coalition government. Getting this point? Then write down. The government so formed with such low majority, the government so formed with such low majority, such thin majority, such low majority or such thin majority is called upon the president to prove the majority, is called upon the president to prove the majority in the floor of the house. ये दोनों ही लोकसभा में पास होता है, ठीक है? फ्लोर ऑफ द हाउस, the majority in the floor of the house. So now the government of the day, the government of the day, of course government of the day होगी जो भी होगी, on its own. Getting ये difference है, एक है on its own, एक है asked to prove. Okay, on its own, the government of the day on its own seeks to prove majority. Government of the day bracket में लिख लो on its own seeks to prove majority by moving a motion of confidence, by moving a motion of confidence and winning confidence of the house, and winning confidence of the house. And if this confidence motion is negative, then the government falls. लिख लो, if the confidence motion is negative, then the government falls. If the confidence motion is negative, then the government falls. Next comes censor motion, CENSURE, censor motion. Clear है? No confidence and confidence motion, दोनों के बीच में difference भी समझ में आ रहा है. Now comes censor motion. I'll make you understand this with respect to, with comparison with no confidence motion. Censor motion को भी कैसे आप लिखो इसको. पहला CENSURE, censor. Censor board होता है ना, cut. That's what it is. Okay. Write down. एक डिफरेंस जो मेन है सेंसर मोशन नो कॉन्फिडेंस मोशन में, वो ये है कि when you have to pass the no confidence motion, there is no need to give any reason. ठीक है, लेकिन सेंसर मोशन के लिए you need to give reason why are you passing this motion. No confidence के केस में there is no need of any reason. So write it down. Under this reason, under this motion, reason for adoption is must. Under this motion, reason for adoption is must. Unlike that in no confidence motion. Unlike that in no confidence motion. सेकेंड डिफरेंस जो मेजर है, जो आपको सेंसर मोशन एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन में
डिफरेंस दिखेगा वो ये है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन इज ऑलवेज पास्ड अगेंस्ट, हाँ, that is council of ministers, but censor motion can be passed against individual minister or group of minister or council of minister. इंडिविजुअल मिनिस्टर के अगेंस्ट भी हम इस मोशन को पास कर सकते हैं, बट नॉट नो कॉन्फिडेंस. नो कॉन्फिडेंस इज ऑलवेज अगेंस्ट एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. राइट डाउन. Censor motion. This motion can be moved against individual, can be moved against individual or group of minister or group of ministers or count or entire COM or entire council of ministers. While no confidence motion is moved only against COM. While no confidence motion is only moved against entire council of minister. अब ये जो सेंसर मोशन है, of course it is passed against an individual or group of minister normally for any lapse of a policy or action. लेकिन जब हम नो कॉन्फिडेंस पास करते हैं तो इट इज मोस्टली टू सी द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. एक तरह से पूरी तरह से ट्रस्ट खो देना गवर्नमेंट में. यहाँ पे या तो कोई पॉलिसी लैप्स हो रही है या कोई और गड़बड़ हो रही है तो उसके लिए पास होता है. बट यू नो व्हाट इज द केस ऑफ नो कॉन्फिडेंस. राइट डाउन. This is moved by censoring the COM. This is moved for censoring the COM or anything, or a minister, और ये खुद से लिख लेना. COM, Council of Minister, or individual minister, और कुछ भी, for a particular policy or action. For a particular policy or action. No confidence motion आप किसी particular policy के लिए नहीं करते हो, ठीक है? Action. Unlike no confidence motion, which is meant to figure out the confidence of Lok Sabha, which is meant to figure out confidence of Lok Sabha, confidence of Lok Sabha in Council of Ministers. Another thing, very important, censor motion does not lead to resignation of COM, but no confidence, fall of the government. Write down last. This motion does not lead to resignation of COM from the House. This motion does not lead to the resignation of the Council of Ministers from the House. Full stop. While no confidence leads to resignation of entire COM. While no confidence motion leads to resignation of entire COM. ठीक है. So that is all with censor motion. समझ में आ रहा है? आप गवर्नमेंट को सेंसर कर रहे हो ऑफ कोर्स, लेकिन यू आर नॉट लीडिंग टू इट्स फॉल. ठीक है. और नो कॉन्फिडेंस तो सेंसर भी करते हो, सरकार को गिरा भी देता है. यहाँ पे सिर्फ सरकार को हिलाया जा रहा है, गिराया नहीं जा रहा है. वहां पे दोनों काम हो जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज मोशन ऑफ थैंक्स. थैंक्स एक्चुअली ये मोशन वो मोशन है जब 5 साल में जो न्यूली इलेक्टेड लोकसभा है, फर्स्ट सेशन ऑफ दैट एंड वेरी फर्स्ट सेशन ऑफ द फिस्कल ईयर. ठीक है. It is always addressed by, this motion is always addressed by the president. And in this motion of thanks, it is the president who gives the speech that he talks about the policies and programs of the previous government or the ensuing government. And that particular motion is then put to vote. If it is said that if that normally एक तरह का briefing हो गया वो एक तरह का president की तरफ से, this motion is always passed. और अगर by chance खो देती है, so it's loss for the government. ठीक है. So that is what motion of thanks is. It is always addressed at the very first session of the newly elected Lok Sabha or the first session of the fiscal year, that is addressed by the president.
And in that, the president gives a briefing of the policies and programs of the previous government or the ensuing government, and then that motion is put to vote. And of course, it is normally passed. Okay, so write down. This is the first session after every general election. Motion of thanks. It is the first session after every general election. And the first session of every fiscal year. And the first session of every fiscal year. It is addressed by the president. Next line, it is addressed by the president. ये पहले भी बताया मैंने, है ना, हमेशा जनरल इलेक्शन का जो पहला सेशन होता है वो प्रेसिडेंट प्रिसाइड करते हैं. Then write down. In this address, president outlines the policies. In this address, president outlines the policies and programs of the preceding government, policies and programs of the preceding government, of the government in the preceding year, or of the ensuing year, ENSUING, or of the ensuing year, of the previous government in the preceding year, or of the government in the preceding year, or of the ensuing year. Next, at the end of the address, motion is put to vote. At the end of the address, motion is put to vote. This motion must be passed in the House or else it is defeat of the government. This motion must be passed by the House or else it is defeat of the government. Or else it is defeat of the government. Then write down. The inaugural speech of President, last line, the inaugural speech of the President is an occasion for the MPs. The inaugural speech of the President, the inaugural speech of the President is an occasion for the MPs, is an occasion for the MPs to raise discussions and debates, to raise discussions and debates to examine and criticize the government and administration, to examine and criticize the government and administration, for its lapses and failures, for its lapses and failures. Quickly, we'll move to another motion, failures. No day yet named motion. No के बाद एक hyphen और फिर day, D-A-Y. No day yet named motion. No day, no hyphen day. Capital N, D का capital D. No day yet named motion. Normally, okay. What is it? Normally, this motion is admitted by the speaker without naming a day. वही हाँ से ही term है. No day yet named motion. कोई पर्टिकुलर डेट डिसाइड नहीं हुआ है और उससे पहले उस मोशन को एडमिट कर लिया गया विदाउट डिसाइडिंग कि ये दिन पे ये डिस्कशन होगा. Further, I'll elaborate what it is. Write down. It is a motion. It is a motion that has been admitted by the speaker. That has been admitted by the speaker. But no date has been fixed for its discussion. But no date has been fixed for its discussion.
तो मैम ये फिर कब कैसे डिसाइड होगा? नॉर्मली क्या करते हैं, स्पीकर विल डिस्कस दिस मैटर विद ईदर लीडर ऑफ द हाउस, ऑल्सो विल टेक एडवाइस ऑफ द बिजनेस एडवाइजरी कमिटी। डिस्कशन बिजनेस देखेगा हाउस में क्या टाइम लग रहा है, क्या मैटर डिस्कस हो रहा है, लीडर ऑफ द हाउस से डिस्कशन होगा, बिजनेस एडवाइजरी कमिटी से रिकमेंडेशन आएगा, उसके बेसिस पे स्पीकर विल गिव अ पर्टिकुलर डेट और डे, एंड ऑन दैट डे द मैटर विल बी डिस्कस्ड। इसीलिए इसका नाम है नो डे येट नेम्ड मोशन। ठीक है, राइट डाउन। स्पीकर आफ्टर कंसिडरिंग द स्टेट ऑफ बिजनेस इन द हाउस, स्पीकर आफ्टर कंसिडरिंग the state of business in the house and in consideration with leader of the house and in consideration with the leader of the house or and after consideration with the leader of the house or on recommendation of business advisory committee or on recommendation of business advisory committee allots a day or days, या तो एक दिन या ज्यादा भी, allots a day or days or part of the day, कई बार होता है बहुत छोटा मैटर होता है, और part of the day for discussion on such a motion, for discussion on such a motion. अगला मोशन वेरी इंपॉर्टेंट, डायलेटरी मोशन, DILATORY, डायलेटरी मोशन। अच्छा, डायलेशन का मतलब क्या होता है? एक्सपैंड करना, डायलेशन होता है ना, डायलेटरी। सो डायलेटरी मोशन क्या करते हैं कि नॉर्मली ये जो मोशन है ये ऑपोजिशन के मेंबर्स प्रेफर करते हैं इसे यूज करना। कोई बिल है जिसको पसंद नहीं कर रहे बट डायरेक्टली अपोज भी नहीं कर रहे, क्या करते हैं, उस मैटर को डिले करने की कोशिश करते हैं। हाँ, हाँ, यस, उसी तरह का कुछ ये डिवाइस यूज करते हैं, मतलब सम दे ट्राई एंड डिलेट, उसको एडजर्न करने की कोशिश करते हैं लेकिन डायरेक्टली अपोज नहीं करते हैं। ठीक है, सो दैट इज डायलेटरी मोशन, राइट डाउन। इट इज अ प्रोसीजरल डिवाइस यूज्ड इन द पार्लियामेंट, it is a procedural device used in the parliament that is mainly used by opposition members, that is mainly used by opposition members to delay the proceedings, to delay the proceedings without directly opposing it, without directly opposing it. ठीक है, and you can write if the motion is passed, if the motion is passed, it halts the current proceedings temporarily. If the motion is passed, it halts the current proceedings temporarily. Is it okay? डिले करने के लिए कौन सा मोशन यूज होता है? डायलेटरी मोशन। अब खींच रहे हो चीजों को, दैट्स व्हाट डायलेशन मीन्स। क्लियर है? बहुत शॉर्ट है डायलेटरी मोशन। नेक्स्ट इज पॉइंट ऑफ ऑर्डर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। दो तीन और रह गए, देन विल बी डन विद इट। पॉइंट ऑफ ऑर्डर, write down. A member of the house can raise a point of order. A member of the house can raise a point of order can raise a point of order when the proceedings of the house do not follow, when the proceedings of the house do not follow the normal rules of procedure, the normal rules of procedure. Normal rules of procedure. Next line. A point of order should relate to
A point of order should relate to interpretation or enforcement. A point of order should relate to interpretation or enforcement of rules of the House or such articles of the Constitution. Government of rules of the House or such articles of the Constitution that regulate the business of the House, and should raise a question that is within the cognizance of the Speaker, and should raise a question that is within the cognizance of the Speaker. This is also, जैसे कि हमने dilatory motion में बोला था कि it is mostly raised by the opposition members. Even this is, it is usually raised by opposition to control the government. Next line, it is usually raised by the opposition to control the government. And ये भी एक तरह का extraordinary device है when it suspends the proceedings of the House. Next comes half an hour discussion. Half an hour discussion. दिख रहा है हाफ एन आवर डिस्कशन है तो हाफ एन आवर पे डिस्कस होगा. इसमें here also matters of public importance are taken, but matters of those public importance are taken which have already been discussed enough, but some clarification, some more little explanation is further needed. तो उसके लिए normally speaker will allow around 3 days in a week to have half an hour discussion and get little more clarity. ठीक है, that is half an hour discussion. You can write down. It is used in case of any matter of public importance. It is used in case of any matter of public importance which has been discussed and debated, to quite an extent already, but needs future explanation on a matter of fact. And like I said, a speaker can allot 3 days in a week to discuss. लिख लो प्रियांशु, speaker can allot 3 days in a week for such discussions. Last line इसमें लिखो, there is no formal motion of voting before the House. There is no formal motion of voting before the House. ऐसा कोई मोशन जैसा प्रेजेंट नहीं होता, इट्स जस्ट दैट स्पीकर डिसाइड करेगा कि अच्छा ये पहले डिस्कस हो चुका है, इस पे हमें थोड़ा बहुत डिस्कशन करना है, तो ठीक है हफ्ते में 3 दिन हम ले लेंगे और थोड़ी और क्लैरिटी आ जाएगी. दैट इज हाफ एन आवर डिस्कशन. नेक्स्ट, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन. Half an hour में it was 30 minutes. Short duration में it is normally 2 hours. And short duration discussion is also known as 2-hour discussion. It is also used for matter of public importance. You can write the discussion should not exceed more than 2 hours. 2 घंटे से ज़्यादा discussion नहीं होना चाहिए. Okay. The matter should not be discussed for more than 2 hours. And here also speaker allots 2 days in a week. Okay, speaker allots 2 days in a week for such a matter. So 2-2 घंटे के 2 sessions लगा लिए
और आपका इंपॉर्टेंट जो भी चीजें क्लैरिफाई हो गया. ट्वाइस अ वीक. ठीक है. Is it clear? Half an hour, 30 minutes, 3 days in a week, decided by the speaker. Short duration, 2 hours in a week, decided by speaker, 2 days in a week. Last, special mention motion. Special mention motion. Normally, वो मैटर जो ना पॉइंट ऑफ ऑर्डर में रेस कर पा रहे हो, ना क्वेश्चन आवर में रेस कर पा रहे हो, ना हाफ एन आवर डिस्कशन, ना 2 hour डिस्कशन, अब वो मैटर किस कैटेगरी में जाए? दे कम अंडर स्पेशल अटेंशन मोशन. राइट डाउन. एनी मैटर विच इज नॉट अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर, एनी मैटर which is not a point of order, and cannot be raised in question hour, half an hour, short duration discussion or adjournment motion, and cannot be raised in question hour, comma, half an hour discussion, comma, 2 hour discussion या short duration जो भी बोल लो, or 2 hour discussion or adjournment motion or any rule of the house. ठीक है. अच्छा, in Rajya Sabha it is called a special mention motion, in Lok Sabha notice. ठीक है. So in Rajya Sabha special attention motion and it is called as notice in Lok Sabha. So that is all with the motions. एक कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर लेते हैं वेरी क्विकली. यूथ पार्लियामेंट, ये आप सबको पता होगा वैसे. प्रियांशी, आर यू अवेयर ऑफ व्हाट यूथ पार्लियामेंट इज? यस. एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने इसे इम्प्लीमेंट किया था. विनीता, डू यू हैव एनी आइडिया ऑफ यूथ पार्लियामेंट? Yes, young citizens of the country. राइट. मतलब सो दैट आप लोग फ्यूचर के लीडर्स होंगे, तो आप लोगों को पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग से फेमिलियराइज करने के लिए सिमिलर सेटअप किया जाता है. दिस कुड बी डन एट कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल ऑल्सो, स्कूल लेवल पे भी होता है, मैटर डिस्कस होता है, एंड देन दैट recommendations go. That is what youth parliament is. Okay, and it started on the recommendation of fourth All India Whips Conference of 1962. 1966 onwards Parliamentary Affairs Ministry ने इसको implement किया था. So write down youth parliament. It started on the recommendation of fourth All India Whips Conference in 1962. Fourth All India Whips Conference in 1962. Next, the Ministry of Parliamentary Affairs implemented it in 1966. Ministry of Parliamentary Affairs implemented it in 1966. Then its purpose was to familiarize young citizens. Its purpose was to familiarize young citizens with parliamentary procedures and values. Its function was to familiarize young citizens with parliamentary procedures and values. Youth Parliament to clear है Priyanshi? Parliamentary procedures and values. And lastly, it is conducted at different levels, schools, college, universities, and at national level. Conducted at different levels, schools, colleges, universities, and at national level. अच्छा, डायरेक्टली स्टार्टेड विद बिल्स ना आप लोग को मैंने स्टार्ट करा दिया था, है ना? डिड आई डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक बिल एंड प्राइवेट बिल?
बस एक कॉलम बना लो एंड देन आपके पास फिर आप वो डायरेक्टली वो बिल वाला पोर्शन जो मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया है वो आ जाएगा. जस्ट राइट डिफरेंस बिटवीन पब्लिक बिल एंड प्राइवेट बिल. ये थोड़ा रह गया था. डिफरेंस बिटवीन पब्लिक बिल एंड मेक टू कॉलम्स पब्लिक बिल एंड प्राइवेट. ऑल्दो यू ऑलरेडी नो व्हाट इज अ प्राइवेट बिल, विनीता. हाँ, हु इज अ प्राइवेट मेंबर. प्राइवेट बिल में बताया था प्राइवेट मेंबर कौन होता है. हाँ, नॉट अ मिनिस्टर बट एन एमपी. बस वही डिफरेंस यहाँ पे आएगा. लिख लो. पब्लिक बिल में लिखो public bill. It is introduced in parliament by a minister. It is introduced in parliament by a minister. It is introduced by the parliament. Sorry, introduced in the parliament by a minister. Private bill introduced by any member of parliament other than a minister. Introduced by any member of parliament other than a minister. ठीक है, पहला डिफरेंस क्लियर है. सेकेंड डिफरेंस, पब्लिक बिल. It reflects the stand of the government or policies of the government. It reflects the stand of the government. गवर्नमेंट से रिलेटेड, गवर्नमेंट का कोई जो पॉलिसी है या उनका क्या स्टैंड है किसी चीज पे. सो इट रिफ्लेक्ट्स द स्टैंड ऑफ द गवर्नमेंट और पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट. प्राइवेट बिल, ऑफ कोर्स, इट डज नॉट रिफ्लेक्ट स्टैंड ऑफ गवर्नमेंट ऑन अ पब्लिक मैटर. गवर्नमेंट का कोई उसमें स्टैंड नहीं रिफ्लेक्ट होता है. प्राइवेट बिल डज नॉट रिफ्लेक्ट द स्टैंड ऑफ गवर्नमेंट ऑन अ पब्लिक मैटर. ठीक है. अगला पब्लिक बिल में लिखो has greater chances to get approved in the parliament. Do you agree? Yes, has greater chances to get approved in the parliament. Private bill, less chances of getting it approved. Less chances of getting it approved. ठीक है. नेक्स्ट डिफरेंस पब्लिक बिल में, अगर पब्लिक बिल की बात आई प्रेजेंट करना है तो यू हैव टू गिव 7 days प्रायर नोटिस. ओके, नीड्स 7 day नोटिस फॉर इट्स इंट्रोडक्शन. नीड्स 7 days notice for its introduction. एंड इस केस में प्राइवेट में needs 1 month notice for its introduction. Needs 1 month notice for its introduction. Next difference, who will draft it? Public bill, it will be drafted by concerned department. Of course, ministry है. Drafting is done by concerned department. And private bill, the drafting is the responsibility of concerned member. Sorry, not minister, member. Drafting responsibility of concerned member. पब्लिक बिल नॉर्मली, ऑफ कोर्स यू नो, अगर ये रिजेक्ट हो जाता है तो इट शोज दैट less confidence over government. It may lead to resignation. Write down. Rejection of the house expresses lack of confidence in the government. Rejection of the house expresses lack of confidence in the government and may lead to resignation. Of course, private bill, its rejection or disapproval does not imply any lack of confidence over the government. It does not imply any lack of its rejection does not imply any lack of confidence on the government. So that is all for the day. Okay, thank you.